presentation on the Hindi speaking Christian congregation from North India, and their pastor who couldn't come today is Reverend Nishid Das, pastor, Centenary Hindustani Methodist Church, Mumbai Central, and she is sister Renuka, Sanjay, Samson. Give her a hand. She's going to give us a nice presentation. मैं रेणुका सैमसन सेंटेनरी हिंदुस्तानी मेथोडिस्ट चर्च की मेंबर हूँ और आज हमारे यहाँ पे बीबीएस सेलिब्रेशन हो रहा है, इसीलिए पास्टर नहीं आ पाए। उनके बिहाफ में यहाँ पे अपनी कलीसिया के बारे में कुछ, जो कलीसिया और हिंदी भाषी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बोलूँगी। मसीह लोगों का पलायन या माइग्रेशन, शहरीकरण मुंबई शहर से संबंधित बातें। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो जिस तरह से अब्राहम उर से पलायन होकर अपने एक अलग जगह को ढूंढते हुए निकला था, उसी तरीके से हर एक इंसान जो यहाँ पे उपस्थित है, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, जो यहाँ से वहाँ अपने नेटिव प्लेस से, जो अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर मुंबई शहर में आता है और वो अपने व्यक्तिगत जीवन को जीता है, या हम अभी भी उस जीवन को जी रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जब लोग माइग्रेट होकर आते हैं और हिंदी भाषी कलीसिया जो कि अलग अलग जगहों से आती है। आप जानते हैं कि भारत में बहुत से नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत से मुंबई को की तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं और यहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। हमारा चर्च भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन, हमारा चर्च बहुत पुराना चर्च है। हमने अभी 144 साल पूरे किए हैं, 144 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं। जब यहाँ पे लोग आए तो उन्होंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया था और कुछ बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारी चर्च की हिस्ट्री इस तरीके की रही है कि जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उससे पहले हमारे यहाँ पे बहुत से मिशनरीज लोगों ने परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाया और उस दौरान हुआ और उस समय मिशनरीज ने यहाँ पे बहुत से चर्चेस को बिल्ड किया था और उस समय हमारा चर्च भी एग्जिस्टेंस में आया। पहले हमारे चर्च में साउथ मलयालम चर्च केवल होता था, लेकिन जिस तरीके से लोग अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर नॉर्थ इंडिया से मुंबई में आए और इसी तरह से उन्होंने क्या उस साउथ इंडिया जो मलयालम चर्च था वहाँ पे इंग्लिश में भी थोड़ा चर्च होता था या ट्रांसलेशन होता था, तो लोग वहाँ से जुड़ने लगे। लेकिन जब संख्या बढ़ती गई तो उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट चर्च जो नॉर्थ इंडियन चर्च, जो कि आज आप जानते हैं सेंटेनरी हिंदुस्तानी मेथोडिस्ट चर्च है, वो अपने अस्तित्व में आया। धीरे धीरे हमारा चर्च बढ़ता गया। हम आज उस चर्च के बारे में बोलना चाहते हैं जो अपनी वहाँ पे जो स्ट्रगल करता है और वहाँ के जो लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल किया है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे लोगों का की समस्या यह होता है कि जब वो नेटिव प्लेस को छोड़ के आते हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अभी मुंबई एक फिल्मी नगरी भी है, तो हमारे चर्च के मोस्ट ऑफ द पीपल हैं जो या तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या बच्चे हैं जो मॉडलिंग करने के लिए आते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब वो हमारे चर्च से जुड़ते हैं तो हमें उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये उनका सामाजिक और एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल होता है कि वो हमारे चर्च से जुड़ते हैं और हमें उनके साथ में वो संबंध स्थापित करना होता है। कभी कभी आर्थिक रूप से भी वो परेशान हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रगल बहुत हार्श होता है। सांस्कृतिक लोग जो अब हमारे यहाँ पे बहुत से, जैसे यूपी से आते हैं लोग, एमपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, ये थोड़े उनके जो कल्चर होते हैं वो हमारे कल्चर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग उर्दू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ हिंदी प्योर हिंदी बोलते हैं, या फिर कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन हम उनके बीच में भी अपने आप को स्थापित करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रगल, एक दौर होता है, लेकिन हम उस पर हमेशा काम करते रहते हैं। इस पेपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसी माइग्रेशन या पलायन का होने या प्रवास करने का जो एक तरीका जो हिंदी भाषी लोगों के बीच में हुआ है, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे।
पलायन या माइग्रेशन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से या विभिन्न कारणों के कारण जाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि हमारे यहाँ पे लोग डिफरेंट जगह से, बहुत से जन रेलवे में काम करते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा अपने जॉब के लिए ट्रांसफ़र मिलता है या फिर वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। दूसरा होते हैं बहुत से सेक्टर्स हैं जैसे बैंक हैं या फिर अलग सेक्टर्स हैं, जैसे बहुत से प्रोफेसर्स हैं जो आए हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे आके उन्होंने अपने जॉब को चुना है और वो यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो उनके बीच में भी वो हमारी कलीसिया से जुड़ते हैं और हम उनको अपनी कलीसिया में हम आमंत्रित करते हैं। साथ ही साथ हमारा चर्च बहुत इस बीच में बहुत ही स्ट्रगल से गुजरने लगा था, क्योंकि क्या होता था कि लोग जो साउथ मुंबई को छोड़ के जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सबब में जाते हैं, तो उनके पास में एवरी संडे ट्रैवल करने का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमने एक छोटा अपना चर्च भाईंदर और मीरा रोड में भी खोला है, और फिर बाद में हमने एक इवनिंग चर्च भी चालू किया है जिसमें हम जो अन्य जाति के लोग होते हैं उनके बीच में हम प्रीचिंग का काम करते हैं और उनको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। तो ये हमारी 3 ऐसी के कलीसियाएँ बनी हैं जो हमारे विद इन सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च के अंडर आती हैं। हमारा मोस्टली जो उद्देश्य है वो है कि जब हम यहाँ पे शहर में आते हैं तो हम अपना योगदान भी देते हैं, हम इस शहर का पार्ट भी बनते हैं, लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण हमें बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ते जाते हैं। कभी हम उसमें दौड़ में परफेक्ट हो पाते हैं, कभी हम पिछड़ जाते हैं। तो ये सब समस्याएं होते हैं। तो हमारे बहुत से जो मेंबर्स होते हैं वो कभी कभी टेम्परेरी ही बने रहते हैं। तो जब हम अपनी कलीसिया को देखते हैं तो हम कलीसिया में बहुत सी चीज़ों को स्ट्रगल पाते हैं। तो हम चाहते हैं, हम हमेशा ये हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना भी टाइम वो हमारे साथ में बिताते हैं हम उनको एक फ्रूटफुल परमेश्वर के वचन के साथ में हम उनके सामने अपनी बातों को रख पाएँ, और हम चाहते हैं कि वो जहाँ पे भी रहें तो वो उस वचन पे बने रहें। इस पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो लोग अपने गांव को छोड़ के यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें बहुत से, जैसे मैंने बताया कि उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। साथ ही साथ में लोग जब गांव को छोड़कर आते हैं तो यहाँ पे उन्हें बहुत सी समस्याएं जैसे अनजाने में उनको दस्तक देती है। लेकिन ये वास्तविकता है कि कई लोग मुंबई या अन्य शहरों में आते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उन्हें इन समस्याओं का झेलना पड़ता है। इस प्रकार के संघर्षों का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन समाधान के रूप में हम उन्हें अपना जितना भी हम उनको अपना प्रोटेक्शन दे सकते हैं या हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। हमारे चर्च का यही एक मोटो रहता है कि जो भी अब हमारे चर्च में आता है हम उन्हें एक वेलकम और अपना घर का ही सदस्य समझकर उनके साथ में व्यवहार करते हैं। कभी कभी लोगों को यहाँ पे आने के बाद में कभी आवास और अन्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, जैसे आवास की कमी, यातायात और परिवहन की समस्याएं उनके सामने होती है, स्वच्छता, क्योंकि कभी कभी ऐसी जगहों पे उन्हें अपने आप को रखना पड़ता है जहाँ पे प्रदूषण और बहुत से दिक्कतें देखनी पड़ती है। सामाजिक असमानता, शहरों में आर्थिक और सामाजिक असमानता, गरीबी और शोषण की समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। सुरक्षा, अधिक आपत्तिजनक क्षेत्रों में असुरक्षा की समस्या होती है, तो हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि आप इतनी ही लिमिट जगह पे आप जाइए, या अगर यूथ है या बच्चा कोई पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आ रहा है तो हमें उनको वार्न करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया में कम इनकम और छोटे कार्य में करने वाले भी हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। कभी कभी उन्हें बहुत से अपने जीवन को या फिर अपने डेली वेजेस को कमाने में भी कभी कभी समस्याएं आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमें उन्हें हर जगहों से हटाया जाता है या फिर उनको शिफ्ट किया जाता है, या फिर बहुत सी समस्याएं आती हैं। ऐसे समय में हमारा चर्च उनको थोड़ा जो भी अपनी तरफ से हो सकता है वो हेल्प करता है। कुछ कारण जिनकी वजह से इस तरह के कार्यों में कठिनाई देखी जा सकती है वो ये होता है कि जब शिक्षा का स्तर कम होता है, बहुत से लोग शिक्षा में कम लेवल के साथ आते हैं, जिससे उन्हें अधिक उन्नत जॉब्स में प्रवेश करने में कठिनाई होती है। आर्थिक असमर्थता, अधिकांश लोग शहरों में उचित मूल्य जीवन शैली से प्रेरित
होते हैं, लेकिन उनके पास धन की कमी होती है जिससे वह कम इनकम या छोटे सेवाओं में रुचि रखते हैं। कभी कभी उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों में। उनको अपने आप को अगर उनके पास में एजुकेशन भी है और उनको जॉब नहीं मिलता है तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। क्षेत्रीय आवास की कमी होने की वजह से उन्हें बहुत से पीजी या दूसरे उसमें भी साथ में रहना पड़ता है। हमारा चर्च का जो रोल है वो है शहरीकरण में शिक्षा देने और लोगों को मदद करने में कई तरीक़ों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा और जागरूकता। चर्च संगठन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाने की मदद कर सकती है और उन्हें अधिक विकासशील और स्वावलंबी बना सकती है। सामुदायिक सेवाएं। चर्च संगठन लोगों को सामुदायिक सेवाएं प्रदान करके जैसे कि आहार, निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा के साथ उनकी मदद कर सकती है। रोजगार संभावनाएं। चर्च संगठनों के रोजगार संभावना प्रदान करके और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधारने में मदद कर सकती है। सामाजिक संबंधों का विकास। चर्च समुदाय के साथ संबंध बनाने और सहयोग करने का माध्यम भी हो सकता है जिससे लोग अपने आसपास के समुदाय के साथ अधिक जुड़ सकें। चर्च संगठन लोगों को की सेवा करने में एक प्रमुख सामाजिक संगठन होती है जो उन्हें शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर सकती है और उनकी जिम्मेदारियों को संभाल सकती है। चर्च शहरीकरण के लोगों को रिक्रिएशन, खेल, अन्य गतिविधियों में मदद करने के लिए कई तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चर्च समुदाय में खेलों और अन्य गतिविधियों का संगठन करके लोगों को स्वस्थ रहने, मोबाइल और अवकाश का समय बिताने का मौका मिलता है। खेलकूद के संसाधनों का प्रबंधन। चर्च संगठन खेलकूद के संसाधनों का प्रबंध करती है जैसे स्पोर्ट्स क्लब, पार्क, खेलों के क्षेत्रों का निर्माण, देखभाल। रिक्रिएशन सुविधाएं। चर्च संगठन लोगों को रिक्रिएशनल सुविधाएं जैसे संगीत कार्यक्रम, कला प्रदर्शन, पार्क और लाइब्रेरी जैसी आदि चीज़ें प्रदान कर सकती है। सामाजिक मिलन और जोड़ों का बढ़ावा। चर्च संगठन लोगों को एक साथ आने के मौके प्रदान करता है जहाँ पे सामाजिक मिलन और जोड़ों को बढ़ावा मिलता है जिससे लोगों के बीच में साथ बांध सकते हैं। इन सभी उपायों के माध्यम से चर्च संगठन शहरी समुदाय को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का समर्थन कर सकती है और उनकी जीवन गुणवत्ता को सुधार सकती है। पास्टर केयर एंड काउंसलिंग। पास्टर काउंसलिंग धार्मिक समुदायों में एक प्रकार की मानसिक सेवा है जो धार्मिक नेताओं या अगुओं या पास्टरों द्वारा प्रदान की जाती है। ये धार्मिक तथा आध्यात्मिक आधार पर मानसिक समस्याओं और समाधान और अन्य सामान्य जीवन के संबंधों में मार्गदर्शन का काम करती है। पास्टरल काउंसलिंग की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। धार्मिक संदेश। पास्टरल काउंसलिंग में पास्टर धार्मिक आध्यात्मिक संदेश को संजीवनी समस्याओं के समाधान के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्नेही और विश्वासपूर्ण संबंध। पास्टर अपने समुदाय के सदस्यों के साथ स्नेही विश्वासपूर्ण संबंध बनाते हैं जिनमें सहानुभूति, समर्थन और उत्साह शामिल होता है। धार्मिक उपासना और प्रार्थना। पास्टर और रोगी के बीच धार्मिक उपासना और प्रार्थना का समय भी होता है जो रोगी को मानसिक आध्यात्मिक समाधान के लिए मदद करता है। विशेष ध्यान पास्टरल काउंसलिंग में है। धार्मिक नेता रोगी की विशेष आवश्यकताओं और संदेशों को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन प्रदान करता है। पास्टरल काउंसलिंग का उद्देश्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों को मानसिक समाधान और आध्यात्मिक विकास में मदद करना होता है। थैंक यू। I invite Reverend Dr. Anand Maharajan. He will give us the religion of Migrant, CMI Tamil Christian Community of Mumbai, historical survey. He is a Master of Divinity, Master of Arts, Ph.D, Annamalai University. He is priest in the Diocese of Bombay Diocese, the CMI Church. We welcome you, sir. Thank you for your kindest introduction, and I'm very glad and pleased to be with you and also before you, because of the encouragement Dr. N.B. David gave me, because I had the privilege of
sharing my doctoral research thesis with him, and he went through the whole thesis. And my book, which is being under kind of publication, and he gave the forward, so he knows the entire stuff which I am talking about. Now, the Tamil Christians migrated to Mumbai. We have to take into consideration the background from which these Tamil people were transplanted from Tirunelveli, exclusively from Tirunelveli district of Tamil Nadu to Mumbai. So first we have to go to the heart of Tirunelveli and what the changes have taken shape there, and from there they migrated to Mumbai and how their migration pattern took over. And in Tirunelveli, each village has its own structure, and that structure is primarily temple. Hindu temple will be in the midst of it, and then Brahmin streets will be around it. Then other castes, Vellara and Maravas and other Sudra caste people will be settled there in the next streets. And then in the periphery of the village, the outcasts, including Nadas, Dalits and other communities, they will have their own streets where they would have settled. So this is the kind of village setup. And when the village setup was there in 1771, the first missionary from the Church of England, he was Swartz, Reverend Swartz. He was the garrison chaplain for Trichy and Punjab. But he has a garrison implanted very recently in 1771 in Palayangoti, Tirunelveli. So he had to go and minister there. So the Christianity to Tirunelveli came in the year of 1771. So it is now about 253 years of heritage. And when he went there, two changes took place. One is individual conversions, and the other one is mass conversion. Individual conversions came from the Brahmins, Velladas, Maravas and Dalit communities. But there was another range of conversion that's called as mass conversion. In the individual conversions, the people will lose their caste and every rights attached to the caste. Whereas in the mass conversion happened in Nadar, among Nadar community, it was a wide range of conversion. The whole village, they get converted to Christianity. And therefore the whole area, the Nadar, wherever they stayed, it became a group conversion. They call it in the history mass conversion. By Dick Coymark, he said it's a mass conversion. And the whole village, when it converts, the people don't require to lose their castes. They can keep their caste and stay in the same caste and enjoy the benefits attached to the caste. So one side, the individual conversion, high caste people, they lose their rights and privileges attached to that caste. Whereas in the Nadas and other communities, when they came into Christianity as mass conversion, they lost every other. They don't require to lose anything. They can keep the caste and all other privileges attached to the caste. So this is the conversion took place in Tirunelveli. And second thing, the missionaries who worked there, they came from licensed by the Church of England under the SPG and SPCK. These two organizations, they were chartered by the British Parliament. So the priests who came there were licensed and ordained by the Church of England. But there were other priests. They were all Germans because the Church of England could not be able to spare the military chaplains. So they have engaged German Christians as missionaries. They gave them license to work among the military garrison and other Christian community. And these people were very pious Christians, so they worked beyond their territory, beyond their duties. They indulged in evangelism and other activities. And through their evangelical activities only, the Tirunelveli Protestant Christianity emerged. And one thing you must know, in Tirunelveli before that, Aryanization was there, but no people, they all stayed in their own religious realms. They did not convert to Aryanization, but they remained in their own religion. Whereas, when Islam came, a few pocket of Christians
they were converted to because of various reasons. But Islamization could not induce these native other communities because they don't have any wielding any political power. When the British people came, the bishop was an Englishman, judge was an Englishman, and military garrison superintendent or whatever it is, he was an Englishman. Everyone Englishman were there. So this community people, they want say that if we embrace Christianity, particularly this Protestant Christianity, which is brought by English people, we will be provided with all social, economic protection and other facilities. So that facilities, and though it didn't induce, the missionaries did not induce, but the people were inducted into Christianity because of seeing the benefits available in the British realm. So there was a mass conversion, and that's the way the Protestant Christianity came into existence in Tirunelveli. And there also, it was combined with Church of England, High Church tradition, SPG, and CMS, Evangelical Group among the Anglicans. They were not ordained, but they were licensed by the Mission Society. And then the Germans who were missionaries, they were belonging to the Pietist movement in Halle and Seminary. So these three traditions combined together and formed the Tirunelveli Protestant Christianity. So it is a combination of three elements. So the Christians, they got the chance of moving everywhere. First they went to Ceylon, Malaysia, Singapore and all other areas as a laborers, and they became very wealthy, and they also progressed in the social realms. Though their status is out of Varna system, but they railed beyond the Sutra level, claiming that they are more than the Sutras. So this is a kind of setup in the Tirunelveli. In 1663, the first birth of Tamils came to Mumbai. They came with the British garrison people and civil military people as butlers, cooks, and other small menial household works. So they came as ordinary workers, and they stayed in their master's house. And for them only, the Vaikala Tamil Church was started in 1863. So it's almost more than 160 years experience in Bombay, Tamil Christianity. Then this was a heterogeneous group. It was not singular people from Tirunelveli. It drew people. Tamil community were drawn from about 16 districts of Tamil Nadu. So there was no unifying factor, and that stays there itself. Then in 1893, a situation came. And how it came? I think Professor Michael knows it. And in 1887, Dharavi got the first tanneries. And that first tanneries was brought by Muslims. And the Muslims was to employ some workers there. So how they will find workers? Somehow they got a trader from Tirunelveli. And from Tirunelveli, he brought initially the community caste that worked on the leather work. They brought them into Dharavi in 1887 to work in the Dharavi Muslim tanneries. And in 1892, after 5 years, all India level, there were Hindu-Muslim rights. Remember that. It is mentioned in the church history. SPG 200 years church history is given. In 1892, there was Hindu-Muslim rights all across India. That is recorded. And that time, the Hindus who were employed in Dharavi tanneries, they must have played some mischief. So in 1893, the same another trader who was converted in Tirunelveli from Muslim Islam to Christianity, he brought the first Tirunelveli Nadar Christians to Mumbai to be employed as tanners in the Dharavi tanneries. They didn't come for any other works. In Tamil Nadu, this Nadar community, they used to be employed in the Palmyra as Palmyra climbers, as agriculturists, and that is their trade. But here, they came down to Mumbai to be employed as tanners in the Dharavi tanneries to replace
their counterparts. This is from the same district, who were employed in the Dharavi tanneries previously. So they were replaced, and they were given a place in Dharavi, which is known as VK Wadi and all other wadis. And these nadas, when they were brought, they were put up in Rajaballi, and for them only a lot of long houses were built, and every room there were about 30 people living at a time. They dine there, they sleep there, everything they used to do there in the same place. So that is the first time, 1893, these were all Nadar Christians employed in Dharavi tanneries. Through them only, the Good Shepherd Church, Dharavi, which Father Michael knows it, next to Anthony's church, it was started. And that's the beginning of Dharavi Tamil migration. And this migration initially started as individuals. People used to come individuals, no families attached to them. Or every 2 years, they go back, another batch will come. So there was keep on moving. After 1920s, after 30 years, then they started digging their own home. How families? They brought their wives and they settled in the house. And so the Muslim, he arranged houses for them also. First Charles, they were called as Pongals, and then houses for them in the same Charles. So the people were migrated in hundreds and hundreds, and they continued the same Tirunelveli liturgy and religious activities, whatever was there. Because every Christian village in Tirunelveli, church will be at the center of it. Because what happened, when the Nada Christians and other community people were converted to Christianity, this fellows, Sudra people, they were Maravas and Vellaras. They were threatened by their progress. The schools were started for them, education was given to them. These people were all becoming big people, accountants, teachers, and everywhere. They were dispensed to other parts of India and also the world for various work of office or a school or any other work. So when they saw the progress, they were threatened by the mass conversion among Nadas. So they started to persecute Christians, and that's why the missionaries purchased plots of lands, village-wise, outside the villages, and about 800 Christian villages were planted in Tirunelveli, and church will be the center of it. The missionary will be just opposite. His accommodation house will be there, and the Christians were settled in beautiful roads. Roads were built and houses were built in rows, and trees were all cultivated, and all other beautiful villages you could be able to see even now also. And 800 villages. So people were transplanted from the village to Mumbai slums. So their life became, once they were in the very beautiful villages, now they settled in slums and became slum dwellers. But in spite of that, they did not forget to give education for their children. So they pressed for the children education. Now most of our children, they are all are graduates, almost all are graduates. About 85 of our Bombay public Christians, Tirunelveli Christians, are all 80% above them are graduates. They are employed in various sectors, in private, also in government. Once upon a time, in the railways, only about more than 200, 300 people were employed in office level. Not in the workshop level, office level, about more than 200 people were there. About 1,000 teachers in the BMC, in the private sectors also. There were a lot of teachers, even today also. The Tirunelveli people who are living in Mumbai, they go for teaching profession in most of the Catholic schools. Now the Catholic schools are reduced because they don't get the teachers from South India. And our people who studied in Mumbai University in various teacher training colleges, they are all employed. We have IT people, you have bankers, and you have all kinds of qualified people in all sectors, including advocates, doctors, engineers. Now about more than 1,000 engineers would have been produced
from the CNI Tamil churches. They are working different parts of Mumbai, and many of them after a period of time migrated to foreign abroad also. Now about 5% of Mumbai Tamil Christians who were born and brought up in Mumbai, they are settled in, they made their settlement in abroad. So to that extent, the progress is very much, but they don't retain, they don't forgo the religion. Wherever they go, they reproduce the Tirunelveli Protestant Christianity everywhere and promote that same religious elements. Whatever ingredients are there, they perpetuate that. And that's the way our Tirunelveli Christians in Mumbai Diocese, we constituted more than half of the diocesan population. More than half of the CNI Mumbai Diocesan population are Tirunelveli Protestant Christians. That's a summary of that.